Hello friends, I'm CA Rashi Maheshwari. Today we'll discuss about the eligibility to take input tax credit as per GST Act, reversal of input tax credit and restriction on taking input tax credit. First of all, we'll discuss the eligibility to take input tax credit. There are two important conditions to be eligible for taking the input tax credit. First, the person should be a registered person. Second, the goods or the services shall be used for furtherance of the business. That means, say for example, I've purchased one bucket, I've used for my personal purpose. Then ITC cannot be taken on it. However, the same bucket I'm using it for my business purpose, then ITC it is eligible. The same product is eligible for input tax credit. Now there are some important conditions stated under section 16 subsection 2 to take input tax credit in your books of accounts. Eligible input tax credit. First, the person should be in possession of the tax invoice. Now what is tax invoice? Is the document should contain all the particulars stated in Rule 46 of CGST rules. Second, the person should have received goods or services or both. Third, the tax charge in respect of supply is actually paid to the government. That can be checked through GSTR 2A. Fourth, the person has furnished return under section 39, that is GSTR 3B. The filing status can be checked from the GST common portal by search taxpayer option. Now there is one more situation that you are purchasing things in lots. Okay, so when the ITC has to be booked? ITC has to be booked on purchase of the last lot or payment of the last installment. Now we'll discuss the restriction on taking ITC. That is Rule 36(4). That is bought by notification number 94/2020 dated December 22, 2020. What this rule says is जितना GSTR 2A में अवेलेबल ITC है उसका 105% मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर सकते हो while filing the return. We'll take an example of the same. Say for example you have purchased goods worth rupees 100 ITC. Input tax credit is rupees 100. Now in GSTR 2A 80 rupees are only available. You can take 105% of 80 rupees, that is 84 rupees of input tax credit while filing your return. However, this 100 rupees, even if you fill 100 rupees, common portal won't restrict you. However, it is the responsibility of the taxpayer to comply this rule 36(4). That is, you can take only 105% of what is available in GSTR 2A. By the same notification number 94/2020, Rule 86B also came into existence. That says restriction on use of amount available in restriction of the use of the amount available in your electronic ledger. This starts with a notwithstanding clause. मतलब this is a compulsory clause. What this says is अगर आपका monthly turnover of taxable supplies other than exempt supplies and zero rated supplies 50 लाख से ज्यादा है तो 1% आपको कैश में पे करना पड़ेगा. टैक्सेबल सप्लाईज अगर 50 लाख से ज्यादा है तो अदर देन एग्जाम सप्लाईज एंड जीरो रेटेड सप्लाईज. हाउएवर अगर आप फॉलोइंग कंडीशंस में फॉल होते हो तो आपको इवन इफ योर टर्नओवर इज मोर देन 50 लाख रुपीस आपको 1% भरना नहीं पड़ेगा. What are these conditions? First, the head of the organization, that is maybe proprietor, karta, managing director, partner, whole-time director, members of the managing committee or associations or board of directors, मतलब head of the organization has paid more than 1 lakh rupees in any 2 financial year. उस केस में जिसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, अगर आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स भरा है as the head of the organization, then आपको ये रूल एप्लीकेबल नहीं है. फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन, अगर आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा का रिफंड लिया है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट LUT रिफंड, देन आप पे रूल एप्लीकेबल नहीं है. थर्ड कंडीशन, अगर आपने 1 लाख से ज्यादा का रिफंड लिया है किस सीन में
Unutilized input credit on inverted duty structure. What is this inverted duty structure? मतलब आपका परचेज इनपुट टैक्स क्रेडिट आप 18% पे बुक कर रहे हो, आपकी आउटपुट लाइबिलिटी आप 12% पे बुक कर रहे हो, तो जो 6% का गैप है, अगर इसका आपने रिफंड 1 लाख रुपए लिया है प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो आप पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन 1% से ज्यादा अपनी आउटपुट लाइबिलिटी कैश में डिस्चार्ज करता है, तो ये आप पर रूल एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, लोकल अथॉरिटी हो, स्टैट्यूटरी बॉडी हो, तो भी आप पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ये कौन से, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग देयर इज नो सेक्शन इन द एक्ट हाउ जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे 99% ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट पे, पर ये रूल है और वी हैव टू फॉलो दिस रूल। नाउ विल डिस्कस ऑफ अबाउट रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। बायर को इनवॉइस डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस से 180 दिन दैट इज 180 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करना होगा। अगर पेमेंट नहीं किया विद इन 180 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ द इनवॉइस, तो यह लाइबिलिटी का आपको एज एन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पेमेंट करना होगा अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 18% पर एनम। अगर 180 दिन के अंदर अंदर डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस से आपने पेमेंट नहीं किया, उस सीन में आपको रिवर्स करना होगा आईटीसी और आपको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करके इंटरेस्ट सहित डिपार्टमेंट को पेमेंट करना होगा। अब हम डिस्कस करेंगे ड्यू डेट ऑफ टेकिंग आईटीसी। मैक्सिमम से फॉर एग्जांपल 1920 फाइनेंशियल ईयर का आप मैक्सिमम अक्टूबर 2020 तक आईटीसी ले सकते हो। अगर कोई इनवॉइस 1920 का है तो अक्टूबर 2020 तक मैक्सिमम आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना होगा, या फिर एनुअल रिटर्न का डेट विच एवर इज अर्लियर। मीन्स Act says furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of the financial year. So this is all about ITC, its eligibility, restriction on use and its reversal. Thank you.